Today we learn about reproductive health. It is the fourth chapter according to NCERT book, that is reproductive health. First of all, we know the health. What is the health? Health, you already know a proverb, health is wealth. That is if wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. So we only study here the reproductive health here in this chapter. The health, that is the something being well. The person that are reproductively healthy. Reproductive healthy means they can produce, that is young ones, that have physically, mentally, socially, emotionally and reproductively healthy. Then you can say any person is complete healthy. That this reproductive health related to physical health, also related to mental health, and also related to, that is the third one, emotional health. A health is something being well, reproductively something being well, that is called reproductive health. A person that are mentally fit, emotionally fit and reproductively fit. Reproductively fit means they are all, every sex organ are, that is reproductively well maintained and that can be able to reproduce young one. No any, that is disorder in their body. So that person is called reproductively healthy. So in this chapter we study about reproductively healthy. So reproductively healthy is the must necessary for develop new progeny, and that are, it is the living character. The like begets like, it is the living character. So every person have reproductively healthy. If unhealthy, then what is the reason of that is unhealthy? We study everything in this chapter. So first we study, that is the person have to reproductively healthy and they can produce same type of young one. Then it is called complete couple. So we see here reason that are that is the reproduction. You already know the many people are nowadays also on, that is reproductively unhealthy. But our population, you already know the population, but our country population have no growth. Population have no growth. Population have explosion. Explosion means sudden change in the population. So we study here population explosion. Population explosion. Explosion. Our country have a population explosion. This is a serious and dangerous problem of the world. But our country also participate in this region. On the basis of, that is population, the second, that is the country of the world. India is the second country, greater population, that is in world. So we 1 year our have population growth at the population of Australia. ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर हमारे यहाँ पर ईयर ग्रोथ होती है. अब सोच लो कितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. जबकि क्या रीजन है? आइए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो जानते उससे हो क्या सकता है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देयर आर एवरीथिंग हैव स्कार्सिटी. स्कार्सिटी ऑफ फूड. स्कार्सिटी माने कमी होने लगेगी. फूड की कमी, शेल्टर की कमी, पार्टनर की कमी, और आप कह सकते हो एवरीथिंग मे बी दैट इज डिफ़िकल्ट. तो होगा क्या? ओवर क्राउड होगी. और जब ओवर क्राउड होगी तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हो जाएगी. इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक जात के अंदर स्ट्रगल होना. तो होगा क्या? दैट आर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पेसीज. तो ह्यूमन स्पेसीज को एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से ख़त्म होने के चांस हो जाएंगे. इसलिए देखें, एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की. और हमारा देश पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में या नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में सेकंड पोजीशन पर है. हमारे देश में जितनी पर साल ग्रोथ हो जाती है पॉपुलेशन की, उतनी टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. तो पर ईयर न्यू ऑस्ट्रेलिया हम लोग जो है डेवलप कर दे रहे हैं. तो देखें क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पहला रीजन इलिटरेसी. हमारे यहाँ शिक्षा ज़्यादा है, लोग जानते नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा, उससे होगा क्या. लोग मानते हैं दैट आर इट इज गॉड गिफ्टेड, वी कैन नॉट चेक इट, इट इज वी कैन नॉट डू एनी थिंग्स. सो ये उनके अंदर इलिटरेसी है, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एक्सप्लोजन है. दूसरा रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है हमारे यहाँ क्या,
कि न्यू मॉडर्न साइंस डिवाइसें डेवलप हुई हैं, मैक्सिमम पीपल फर्टाइल कर दिए जा रहे हैं साइंटिफिक डिवाइसों से। जो अवेलेबल नहीं थे उनको भी साइंस ने, अभी आपको पढ़ाएंगे कौन कौन सी डिवाइसें मॉडर्न आ चुकी हैं। एवरी पर्सन, अबाउट एवरी पर्सन कैन बी दैट इज द वी कैन चेंज इनटू फर्टाइल। जो इनफर्टाइल है उनको फर्टाइल में चेंज करने के लिए तमाम डिवाइसें हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तीसरा रीजन उसका है कि हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि द वन सन इज नेसेसरी, दैट इज रिलीजियस वैल्यू। धर्म में हमारे वर्णन है, ऐसा लोग मानते हैं कि एक सन होना जरूरी है, इसलिए भी कई जो है उनके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ एक स्लोगन है, हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, स्लोगन मात्र बन के रह गया है। तो एक तीसरा रीजन वो अभी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। चौथा कंट्रोल ये हमारे यहाँ है, चौथा रीजन ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कि लोग मानते हैं कि धार्मिक रूप से जिसके पास एक लड़का नहीं होगा उसका जो है आगे जा कर के उनको नए जनरेशन में उनको स्थान नहीं मिलेगा या जो कुछ भी होगा, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहे हैं। और हो क्या रहा है, अगला रीजन उसमें है कि हमारी डेथ रेट घट गई है, अब बर्थ रेट बढ़ गई है। बर्थ रेट क्या होती है? नेटैलिटी, नेटैलिटी, नेटैलिटी इंक्रीजिंग। और दूसरी क्या? मार्टैलिटी, मार्टैलिटी में डेथ रेट डिक्रीजिंग। इसलिए भी नेटैलिटी हमारी, अगर मार्टैलिटी नेटैलिटी इक्वल रेशियो में होती तो शायद ग्रोथ और या जो है एक्सप्लोजन नहीं होता। तो देखें क्या है कि जन्म दर जो हमारी है वह बढ़ गई है, मृत्यु दर घट गई, इसलिए भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तो साइंस इस फील्ड में क्या कर सकता है? और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आपको बताया कि सब चीज़ की कमी हो जाएगी। व्हाट इज द इफेक्ट एंड डिफेक्ट इन आवर सोसाइटी? तो पड़ेगा क्या? एवरीथिंग हैव दैट इज डिफिशिएंट, सब कुछ होगा लेकिन कम होने लगेगा, फूड की कमी होने लगेगी, शेल्टर की, आवास की कमी होने लगेगी, तो स्ट्रगल छिड़ जाएगी। और स्ट्रगल होगी तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में जात के ख़त्म होने के चांसेज होते हैं। डायनासोर इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस तरह से ख़त्म हो चुका। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो हमारी साइंस क्या कर सकती है? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए बर्थ कंट्रोल है। अब पढ़ेंगे हम बर्थ कंट्रोल। इसके लिए हम किस प्रकार से साइंस इस फील्ड में क्या कर रही है, जो एक सीरियस प्रॉब्लम चल रही है ये कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, इस फील्ड में साइंस क्या कर रही है। तो साइंस देखिए क्या किया कि बर्थ कंट्रोल की डिवाइसें दी, और यह बर्थ कंट्रोल जब चाहें, जिस उम्र में चाहें, जैसे चाहें आप जो है प्रोजनी को डेवलप कर सकते हैं, जब तक चाहें रोक सकते हैं। यह आपको यह तमाम डिवाइसें हम दे रहे हैं जिसमें साइंस की डिवाइसें बर्थ कंट्रोल हैं। इनको कहते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज। हम कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज आपको बताएंगे और जिसके आधार पर साइंस से कहती है कि जब आप चाहिए, जिस एज में चाहिए, जब आपको ज़रूरत समझिए कि हमको पेरेंट बनने हैं तो बन सकते हैं। वह कंट्रासेप्टिव डिवाइसें क्या हैं? ये दो तरह की डिवाइसें हमने बांटा है दो ग्रुपों में। एक होती है जिसके कहते हैं नॉन हार्मोनल। तो पहला देखें नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइसें, नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइसें। यह इसमें हार्मोनल नहीं है, ये नॉन हार्मोनल है। ये कौन कौन सी नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइसें हैं जिससे कपल यूज कर सकता है और जब चाहे अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर दे कैन डेवलप प्रोजेनी। तो फर्स्ट देखें नॉन हार्मोनल में नेचुरल, पहला देखते हैं फर्स्ट में, पहला देखते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग में NFP बोलते हैं, NFP आप शॉर्ट फॉर्म पूरा। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या है? दिस फैमिली प्लानिंग इज रिलेटेड टू दैट आर कपल कैन बी दैट इज द यूज दी नेचुरल फैमिली प्लानिंग with NFP by using contraceptive devices and by using a safe period. In the human female there is a menstrual cycle, and menstrual cycle have that is you can say 10 to 17 days of the menstrual cycle that are very, that is the unsafe period.
because ovulation occurs in 14 days of menstrual cycle. So that time of that is the cohabitation, or you can say that time we avoid the sex, then we can check that is the development of the progeny, new progeny. We can check. The natural method, no anything you have to use. The safe period, that is the 10 days, 10 to 17 days, unsafe. अब इसके आगे और पीछे बिफोर 10 days menstrual cycle and after 17 days safe according no very that is you can say reliable, but maximally it is possibility that before 10 and after 17 it is safe period, and these are that is the natural family planning nature that can be any couple use. So you can check that is the pregnancy system for check the pregnancy. First, natural family planning. Second, the devices. What withdrawal method? Withdrawal method. This is the second, that is the family planning method, non-hormonal planning. Suppose any couple that is the mate to their partner, then before the ejaculation, they remove their organ and X out release their sperm. So these are the withdrawal method. It is also a method, withdrawal method, that can be used couple, no any side effect. So these are the safe method. Third method, barrier method. Barrier method also very reliable method and also very helpful to genetic STD diseases. That is, there are many condoms, male condoms and female condoms that are used, and that is they are free by that is our government. It is provided to free by our government. That is barrier method. In these are two condoms, the male condoms and female both have a condoms. Female condoms are that is fit in with their uterus, that cannot be chance of the contraceptions. Other thing that are it is also safe the person to any genetic to any that is STD disease, sexually transmitted disease. We study here some disease sexually transmitted, so they are also a safe disease. That are very safe method, that is barrier method, and these are the condom also that is we can use. Fourth method that used by person, that is IUD. Very effective method also this is IUD. This is the used by that is female IUD, intrauterine device. Intrauterine devices. This is also that is the non-hormonal method IUD. IUD the device, scientifically made device. Suppose the copper T, simple copper T, RCU7. Also that is these are the different type of the copper based devices. These are the loop-like structure that are T-shaped, and it is adjusted in the female uterus, by which that is that they are a shape. That is no contraception occur by that is these contraceptive devices, copper T and CU7. Also it is copper also that is kill that is to the sperm. So this is the copper devices, copper T or CU7. Other thing LNG20. Also that is contraceptive devices LNG20, that are also it is fit in the IUD system, and also helpful hormonal, they release hormones, and also helpful to that is check the contraceptions. So these are the IUD, intrauterine devices, copper T, loop, something maybe. This is called IUD. This is also helpful to that is check the contraception. So these are other methods that are related to that is the fifth method, sterilization. Sterilization is the very permanent method. When couple do not that is want to develop again the progeny, then it can use sterilization method. And these are two methods for male and female. One have vasectomy, other have tubectomy. That is you can say surgical method, or you can say cesarean method. That is these are called sterilization. Is the two things, vasectomy and second tubectomy. Two methods, vasectomy and tubectomy. Vasectomy for male and tubectomy for female. You see here other devices, that is the sterilization, that couple cannot produce progeny again.
that is sterilization. Sterilization में first we study vasectomy, permanent method. Vasectomy, it is the permanent method. Vasectomy, that is there are semi, you can say that is the vast difference of the male. Vast difference of the male. Vast difference of human male. Cut it. Vast difference of the male, cut and ligature. We cut it and ligature it. That is called, or that is other contraceptive devices, that is vast difference, cut and ligature. So these are, that is the very effective and permanent method when the couple do not want to produce young one. That is called, that is the vasectomy. Second thing, tubectomy. Vast difference, cut and ligature. Cut and ligature. Cut it and ligature. This is the second, that is the permanent method, vasectomy. Second for female, tubectomy. Also a contraceptive device, permanent device, sterilization method, that are tubectomy. The fallopian tube of the female, cut and ligature it. फैलोपियन ट्यूब को काट करके थोड़ा सा सर्जिकल ऑपरेशन है, डॉक्टर कट करके बांध देता है, तुरंत तो घर जा सकता है, नो प्रॉब्लम है नहीं, नो साइड इफेक्ट. This is safe for whole life, but it is one time use, permanent method. And every which you study earlier, that is temporary method. मैंने जो पहले बताया आपको टेम्पोररी था, जब आप चाहें डिवाइस को यूज करें, जब ना चाहें तो आप यू कैन डेवलप ए प्रोजेनी. ये परमानेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन. वैसेक्टोमी फॉर मेल और ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल. ये फीमेल के लिए है. इसके किसको कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब को. फैलोपियन ट्यूब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है. फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं. दिस इज द ट्यूबेक्टोमी. सो इट इज परमानेंट मेथड फॉर दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन. ये सर इतने मेथड बताए वो नॉन हार्मोनल थे, इनका कोई संबंध हार्मोन से नहीं था. दीज आर द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज. ऑल एवरी डिवाइस है, एनी पर्सन कैन यूज एनी वन डिवाइस, and according to their, if we want to develop progeny at any stage of life, they can develop, and they want to never develop the progeny, then they can use the permanent method, tubectomy and vasectomy. So we see something else, that is hormonal method. Hormonal contraceptive devices are hormonal method for contraception. Hormonal method. ये देखिए इस संबंध इसका हार्मोन से है. There are two hormones that can check the pregnancy, estrogen, and first second thing is the progesterone. That is hormonal pills. आप जानते हो वेरी मच pills. Pills is that is a very effective method that can used by female. Hormonal pills. These are estrogen and progesterone both. Some have estrogen, some have estrogen and progesterone both. These are hormonal pills used the female step by step per day. So that can these are hormonal devices. Pills, Mala D, Mala, and there are many Saheli, many commercial names. That is these are made by India. That is the female can be used it, and that can be according to desire they can develop the progeny. So first method hormonal method pills है. दूसरी injections. There are injections. The female can take injections that are safe by injection method. Body you have the person that is the female use the injection. Name of the injection is Depo-Provera. Name of it Depo-Provera. These are that is the medicine that are injected in that is body of the female, and that cannot be used the contraceptions. That is no use of any contraception, that can not able to produce young one. These are the injection method. This is hormonal. Everything related to hormones. Hormonal injection. Third device you see here. That is the implant. Implant method. There are some that is the small hormonal devices that are fit inside the skin of the arm. That can release hormone, and female cannot produce young one. So this implant a small surgical devices. There are that are fitted in below the skin of the female that is have a fertilization, and that cannot produce the progeny. That is called implant. Other thing is
emergency contraceptive devices, emergency hormonal contraceptive devices, emergency contraceptive devices, emergency contraceptive devices, EHC, emergency hormonal contraceptive devices, it is called EHC. This EHC that is device, suppose any female that are falsely, that are can be, or that are after the fertilization, or after, you can say, after the copulation, or after the rape, any female do not, that is want to the progeny, or that are that want to do not pregnant, then use these devices, that is the EHC, emergency contraceptive devices. इसके लिए एक दवा बनाई गई इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज. कभी कभी रेप वगैरह ऐसे केसों में आफ्टर दैट इज आफ्टर कॉपुलेशन or after that is the rape, that devices, the medicine that can be used, that is called progesterone, progesterone and levonorgestrel, name of that is the medicine that can be used to save, that is the contraception. So these are the some devices that are used, made by scientific devices, that can, any devices used by couples that can be safe. There are many devices related to male, many devices to female. Everyone about safe, no any that is major side effect. So these are can be used, and according to their result they can produce embryo and progeny. So I am describing you, I described you that is the reproductive health, and that is in reproductive health, the first heading, the family planning devices. Second thing, what is that is the population, and what is the population explosion, how we can check it, the devices for checking the population explosion, that are there some hormonal devices, some non-hormonal devices, everything is that is I explained you. If you like my video, then I request everyone that is subscribe my channel, and also like my video, and also the comment upon that is any disturbances. So I that is hope you do not disappoint me. Thank you. Have a nice day.